Good evening. I am Anil Agrawal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Right advice at right time. That is the objective of this channel. And why I created this channel. The purpose of creation of this channel is to give right advice at appropriate time. That is called right time. Now, if we look at the unemployment scenario at present, we can say the youth are struggling to get the job. This is a harsh reality. Whatever people may say, that self-employment is best, but still, the failure rate at self-employment is also very high. And this is the reason that most youth, they look for an option where their future is secure, where they have recurring income, and where they can grow and show their potential. And that's why the large number of youth, they opt for jobs. Now the dilemma with the youth is what type of job they should prepare for, what type of job they should join. And this is the real issue. This is the issue which most youth don't have any answer. And that leads to confusion, that leads to a lot of wastage of energy and their potential. And sometimes it leads to frustration because people are not giving the right advice to people at many times. Sometimes we see some video or some social media post or some stories somewhere where certain positions are glorified. Somebody will say, if you become this, you will get this facility, you will have this, you will have this. Having knowledge what type of salary and facilities are available at various positions is good, but not becoming realistic is a real issue. Sometimes we try to go for those examinations where I don't see any possibility or any chance of getting this job, but I simply participate because others are also appealing. And this cost a lot in terms of time and effort, and ultimately such type of candidate lose the chance in those exams also where going was not as tough. Now let's take some examples to understand and to make the things clearer. Yesterday result of IAS came. 600 something, maybe 685 or so people qualified IAS examination. How many people aspire to become IAS every year in this country? Lakhs. And these lakhs of people are putting all out effort. And some of them has reached the interview stage. Today I was reading one comment on our channel. Okay, sir, everybody talks about this 685 people. What about other 1200 odd people, those have reached the interview but could not get the job? This is harsh reality. Because positions are limited, so only limited people will get the job. Others have to try next time. Now, if we look at the topper of this year, she missed the IAS last time by 1 marks, and this time she is topper. So she continued the effort, she got it. But everybody who will continue the effort will not get the job. So there are lessons from every episode.
If vacancies are less, only less people will get. If lakhs of people aspire for that position, will not make the environment conducive to have this post by everyone. We have to understand this. The vacancies are limited, takers are unlimited, only limited people will get it. So what is the lesson from this? I should focus on the sectors where large vacancies are there. This is one way of getting the job. One is, I need a job of my choice. Another is, I need a job. There is a difference. In India, it is very difficult to be employed. In India, most people are underemployed. The moment I understand this distinction, I will not be unhappy. In India, very few people are employed. Employed means they are employed at a position which is worth their potential. This is employment. But in India, we are getting underemployment. The most people are getting the job not as per their potential, but very, very less than their potential. Although they are in eyes of public employed, but they are actually underemployed. And since they are underemployed, they remain unsatisfied. Today I was reading another comment. Somebody has said, sir, always you use the word officer. But even after becoming officer, we don't feel like officer. Now, why such type of feeling comes? Because you never aspired to become officer. The fact is, you wanted to become engineer. The fact is, you wanted to become doctor. The fact is, you wanted to become architect. You wanted to become dentist. You wanted to become something else. But since there was no opportunities in those fields, then you changed your direction and then you went to an employer who can give you a job. Since your mindset and the mindset of the job is not matching, you are not enjoying. When I was in banking, the similar conditions were there. Nothing has changed and nothing will change in future also. This we have to be very, very clear. People were uncomfortable in our time also, but there were people, those who are enjoying the position at that time also. Today also people are uncomfortable and today also people are enjoying their position. So it is not the position that will give you enjoyment. It is you, your aspiration and your qualities that will give you happiness. If you are still unhappy even getting the job in such a difficult phase of economy, so what can be said? When lakhs of people are not getting the job and many of them are better than you, you can't say you are the best. Always there are people who are better than you. There are people, those are inferior to you. So if you have got the job, you are not the best. Mind it. But still you have got the job. But there are many people, those are better than you, still unemployed. But still you are unhappy. Because your yardstick of happiness is very different. You have not got the job in the area of your passion. This is the root cause of your unhappiness. Not the bank job, not the public, not the place of posting. A bank has to function in metros, urban areas, semi-urban areas and rural areas. That is the basic structure of a bank. They have to deal with masses. They have to listen their concerns.
But if I am uncomfortable in a rural posting, it is my fault, not the fault of bank. If I am uncomfortable listening questions from customer, it is my fault, not the organization fault. Organization will function as per their area of operation. If we are in bank, the basic role of bank is to meet the aspiration of customers. And customer is king in bank. And that's why I have to puncture my ego. I have to puncture my ego and listen what customer says. The real problem comes when I put my ego above the ego of customer. The real conflict starts. So the people, those are having an art of puncturing the ego, adjusting to the environment, they are the happiest person in banking. And the people, those always put their ego, their qualification, their aspiration ahead of organization aspirations, they are always unhappy. So, right advice at right time means you have to choose wisely. If you feel you are uncomfortable in public dealing, you should not opt for banking job. But if you are looking for a job, and if the jobs are only available in banking, insurance sector, and that too selection process is fast, you have to go for that. Now today, I have seen some people, those are failed in IAS. Now they are thinking of appearing in PO examination. And lakhs of such people will appear this time. Because next year also, if they have not been selected this year, next year may not be different. Maybe number of vacancies may reduce further. So they will like to become settled. And settlement only comes where vacancies are. And the vacancies are there in banking sector year after year. I have put one video where a person who wasted his 6 years trying for government job. He appeared in number of government jobs including IAS, failed miserably, and then he shifted his focus to bank. He watched our videos, he followed the advice given by me. In less than a year, he became SBI PO, and today very happy serving as SBI PO. There can be many POs, those are unhappy. There may be many POs, those are happy. So if we listen to unhappy people, we will become unhappy. If we will listen to happy people, we will become happy. So it is our choice. So one thing we have to understand, in India, you are not getting employment. Any person who is getting so-called employment is underemployment. And the moment you understand this truth, that I will be happy if I am underemployed, then you will be happy. Otherwise, you will be unhappy throughout your life. Because the jobs offered to you may not match your skills. Because you never wanted to be probation officer or bank clerk when you started your studies. That is a hard fact, you have to accept it. Because in India, parenting is like that. Every parent wants his or her child to be doctor, engineer, architect, or some superstar. No one wants to work for the real jobs that is serving the nation, that is banking, insurance, and certain sectors. Without banking, this country cannot survive. This is the pillar of the country. And if you are working in an organization like bank, that means you are serving the nation, like defense services, like railways, like any other government sector. So we have to be proud of our job. We have to be proud of our profession. We have to be proud of our vocation. And this will not come by choice. These days, whatever you are getting is out of compulsion, not by your choice. The moment you understand it, you are happy. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे.
राइट एडवाइस एट राइट टाइम, ये मैंने एक चैनल स्टार्ट किया। अब इसके अंदर हम क्या बातें करते हैं? हम बातें करते हैं जो वास्तविक है। अगर आज हम स्थिति को देखें तो जो रोजगार है वो बहुत मुश्किल से मिल रहा है। बेरोजगारी जो है वो एक विकट समस्या है। इसको हमें सबको मानना पड़ेगा और सब मानते भी हैं। कुछ लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाइए, वो भी एक अच्छी बात है, पर क्या सभी सेल्फ एम्प्लॉयड सक्सेसफुल हैं? क्या उसमें फेलियर नहीं है? क्या सब लोग उसको कर सकते हैं? आंसर है नहीं। और इसीलिए अधिकांश युवा उस चीज़ की तलाश में रहते हैं जिससे उनके जीवन में एक कंसिस्टेंसी आए, एक सिक्योरिटी आए, एक ऐसी नौकरी लगे जहां से वो अपने जीवन में पूरा जीवन भर जीवन यापन कर सके। और इसलिए अधिकांश लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं। ये एक सच्चाई है। अब दूसरी तरफ क्या है? एस्पिरेशंस। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छी नौकरी में जाना चाहता है। अब कल आईएएस का रिजल्ट आया, 685 के करीब शायद लोग सेलेक्ट हुए। अब मैंने आज एक कमेंट पढ़ा कि सर इन 685 की तो सब चर्चा कर रहे हैं, उनकी क्यों नहीं चर्चा कर रहे जो 1200 लोग इंटरव्यू देने गए पर रह गए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर जो रह गए उन्हें कुछ नहीं मिला। मेहनत उन्होंने भी की, मेहनत इन 685 ने भी की। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि आपने मेहनत की या नहीं की ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है सामने पोस्ट है या नहीं। अगर वैकेंसीज ही 685 हैं तो नेचुरल है, चाहे लाखों लोग बैठे किसी कंपटीशन में, जॉब तो 685 को ही मिलेगी। अब उसमें आप भी हो सकते हैं और आप नहीं भी हो सकते हैं। इस यथार्थ को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और यही कारण है कि जब हमें ये चुनाव करना है कि हमें कौन सी वैकेंसीज को चेस करना है, किस दिशा में हमें जाना है, तो हमें नंबर ऑफ वैकेंसीज को एक बहुत बड़ा यार्डस्टिक अपने सामने लेके चलना है। क्योंकि जहाँ पर वैकेंसी है ही नहीं या जहाँ पर वैकेंसी बहुत कम है, सीमित हैं, तो वहाँ पर सीमित लोगों का ही चुनाव होगा। इसलिए जो मेरे एफर्ट्स हैं हो सकता है मुझे अल्टीमेटली निराशा दे, और ये निराशा मेरे उन एग्ज़ाम्स में भी परफॉर्मेंस पे असर डाल दें जो नौकरी मुझे मिल सकती थी। और इसीलिए इस चैनल पे मैं बार बार आपको क्रैकेबल एग्ज़ाम्स एंड नॉन क्रैकेबल एग्ज़ाम में डिस्टिंक्शन बार बार समझाता हूँ। अब एक मैंने कमेंट पढ़ा कि सर आप बार बार ऑफिसर की बात करते हो, मगर मुझे बैंक में अफसर बनने के बाद ऐसा फील ही नहीं होता मैं अफसर हूँ। ये बिल्कुल आपने अच्छा कहा। क्या आज से 30 साल पहले फील होता था कि हम अफसर हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता। जो परिस्थितियां आज हैं ऐसी ही वर्षों पहले भी थी और ऐसी ही वर्षों तक रहेंगी। ये यथार्थ है। अब इसके अंदर दूसरा यथार्थ आप समझिए कि आपको ऑफिसर की फीलिंग क्यों नहीं होती। क्योंकि जब आपने पढ़ाई शुरू की थी आप अफसर बनना ही नहीं चाहते थे। आप बनना चाहते थे इंजीनियर, आप बनना चाहते थे डॉक्टर, आप बनना चाहते थे आर्किटेक्ट, आप बनना चाहते थे सुपरस्टार या समथिंग एल्स। आपने उसकी पढ़ाई भी की, उसकी दिशा में कदम भी उठाए, पर वहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर आपने एक कंप्रोमाइज़ किया, फिर आपने देखा कहाँ पर नौकरी है, क्योंकि अब आपके पास दो चॉइस थी, या तो नौकरी नहीं है या नौकरी है। और आपने मेहनत शुरू की और आपको एक नौकरी मिल गई। अब ये जो नौकरी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो काम कराएगी जो इसका बिजनेस है। और आपका जो माइंडसेट है वो ये है कि मैं अफसर हूँ, मेरा रुतबा होना चाहिए। अब बैंकिंग क्या है? बैंकिंग की शाखा मेट्रोपॉलिटन में भी होगी, अर्बन में भी होगी, सेमी अर्बन में भी होगी, रूरल में भी होगी।
तो बैंक को रूरल लोगों की भी सेवा करनी है, सेमी अर्बन की भी करनी है, अर्बन की भी करनी है, मेट्रोपॉलिटन की भी करनी है। अब किसी को रूरल ब्रांच मिल गई, उसको दुख शुरू हो गया कि मेरे को रूरल में क्यों डाल दिया। पर रूरल ब्रांच तो इस बैंक का काम ही है। जब इसका ये काम ही है तो नेचुरल कोई तो करेगा उसको। प्रश्न ये आता है, मैं ही क्यों? तो दूसरा प्रश्न ये आता है, एक व्यक्ति क्यों नहीं? क्योंकि आज वो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा। कोई किसी को परमानेंट तो रखते नहीं है एक जगह, रोटेशन में मौका मिलता ही रहता है। तो होता क्या है कि जो हमारी मनोस्थिति है और जो ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशंस हैं, क्योंकि वो मैच नहीं करती, वो हमारे दुख का कारण बनती है। जब अब मैं बैंक में आ रहा हूँ तो मैं ये तो जरूर कंपेयर कर रहा हूँ कि कहाँ पर कितनी सैलरी है, कितनी फैसिलिटी है, कहाँ पर कितना रुतबा है, मगर मैं ये नहीं देखना चाह रहा कि उस ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशंस क्या है। अगर वो बैंकिंग है तो यहाँ पर एम्प्लॉय प्रधान नहीं है। अगर वो बैंकिंग है, यहाँ पर कस्टमर प्रधान है, यहाँ पर कस्टमर इज किंग। तो अगर हमें कस्टमर डीलिंग करनी आती है, हम कस्टमर से बात करने में कंफर्टेबल है, हम इस पोजीशन को एंजॉय करेंगे। मेरे जीवन काल में मैंने बहुत लोग देखे जो कस्टमर सर्विस को बहुत एंजॉय करते थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिलेशन भी बिल्ड किए लोगों के साथ और अपनी पर्सनल लाइफ में भी उसके फ़ायदे उठाए। और मैंने ऐसे भी एम्प्लॉइज़ देखे, कोई कस्टमर कुछ भी काम करने को उनको कहता था, वो लड़ पड़ते थे और कई जगह तो बहुत बुरी हालत हो जाती थी, उनको दोनों को अलग करना पड़ता था, कस्टमर और एम्प्लॉय को। क्योंकि कई बार हम अपनी माइंड सेट को एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। जब हम बैंकिंग में आते हैं तो एक चीज़ बड़ी समझने की होती है कि हमें अपनी ईगो को पंचर करना पड़ता है। हमें कस्टमर की ईगो को अपने से ऊपर रखना पड़ता है। जैसे एक दुकानदार है, जब हम उसके पास जाते हैं सामान लेने, वो जितना मर्जी अमीर हो, करोड़पति हो वो, मगर हमें 10 रुपए की भी चीज़ लेनी होती है, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं वो पोलाइटली बात करेगा हमसे। इसी तरीके से मैं जितना बड़ा अफसर हूं, अगर बैंक में कोई कस्टमर आ रहा है तो वो उम्मीद करता है कि उसकी वो रिस्पेक्ट करेगा। और यही कॉन्फ्लिक्ट का कारण कुछ लोगों को खुश रखता है, कुछ लोगों को दुखी रखता है। जो लोग ये बात समझ जाते हैं कि कस्टमर प्रधान है, हमें इससे लड़ना नहीं है, हमें सीखना है कैसे हम इसको खुश रखें, हम भी खुश रह सकते हैं, ऐसे एम्प्लॉय पूरी ज़िंदगी मौज करते हैं, खुश रहते हैं, जो भी पोजीशन मिलती है उसको एंजॉय कर पाते हैं। और जो लोग ये समझते हैं कि मैं ऑफिसर हूँ, मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ, चीफ मैनेजर हूँ, एजीएम हूँ, मेरा रुतबा है, मैं तो झुकूंगा नहीं, वो हमेशा परेशान रहते हैं। क्योंकि ये जो रैंक्स हैं ये सिर्फ आपको सैलरी और अलाउंसेस देने के लिए। बैंकिंग में ये आपको मतलब कस्टमर के अगेंस्ट पावर देने के लिए नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो, ये हमें समझना है। आप एक बिजनेस कर रहे हो। बैंकिंग एक बिजनेस है। तो जैसे एक बिजनेसमैन जितना मर्जी अमीर होते हुए भी नरम रहता है, हाथ जोड़ के रहता है, वैसे ही एक्सपेक्टेशन होती है कि जो बैंक के अंदर भी लोग हैं उस तरह से रहें। और ये कठिन होता है, कठिन होता है। और इसीलिए काफ़ी लोग इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। आप पूछते हो ना कि सर क्या बात है, क्योंकि मैं तो कैंडिड बात करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग खुश हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा सारे लोग दुखी हैं, क्योंकि जो खुश हैं वो तो किसी चैनल पे आके बताते नहीं है ना मैं खुश हूँ, तो हमें पता नहीं लगता कि लाखों लोग खुश हैं। कुछ हज़ार लोग दुखी हैं, वो आके बताते हैं जगह जगह कि मैं दुखी हूँ, तो लगता है कि सभी लोग दुखी हैं। ये भी कई बार ऐसा प्रतीत होता है। मगर आप ये मान के चलिए कि भारत के अंदर बहुत कम लोग एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयड का मतलब है जो आपकी सामर्थ्य है उसके मुकाबले की आपको जॉब मिली है। अधिकांश लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं।
अब मान लीजिए जिस जमाने में मैंने बैंक ऑफिसर ज्वाइन किया उस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएट था फिजिक्स के अंदर, मुझे सीधा प्रोफेसर लगना चाहिए था, मगर नहीं मिली नौकरी। तो उस समय बेस्ट जॉब क्या थी? आईएएस बन जाओ या बैंक अफसर बन जाओ। बैंक अफसर बन गए और हमने पूरी जिंदगी एंजॉय की। फिर जब हम आ गए, इस मोल्ड में घुस गए, तो हमने अपने को बदल डाला। हमने दिमाग में कभी नहीं डाला कि मैं एमएससी फिजिक्स हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ऐसे टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ जब बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, मैं तो पता नहीं क्या हूँ। आजकल तो कोई छोटा छोटा क्लर्क भी बन जाता है, अफसर बन जाता है, मैं उसकी ईगो देख के हैरान होता हूँ, किस तरीके से वो पेश आते हैं, किस तरीके से बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उनको देख के मुझे कई बार हंसी आती है। हम इतने क्वालिफाइड होके अपने को हमेशा हमने नीचा रखा और इसीलिए हम खुश रहे। कस्टमर ये कभी जान ही नहीं पाया कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो इतना क्वालिफाइड व्यक्ति है। उसको हमेशा ये लगा कि अगर मैं 8वीं पास हूं तो शायद ये भी 8वीं पास है। अपनी ईगो को पंचर करना बहुत मुश्किल काम है। अब देखते हैं, मैं चैनल चला रहा हूं, कई लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं, नादान हैं, कुछ भी लिख देते हैं, हम चुपचाप उसको सुन लेते हैं, चिंता नहीं करते। कई जगह मैंने देखा वो गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, भिड़ने लगते, क्या फायदा, वो नादान है। अब कई लोग हैं आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, कई मैंने चैनल्स पे देखा है आके बड़ी सुविधाजनक तरीके से आपके खिलाफ बोलने लगते हैं। कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो उस ऊंचाई पे है ही नहीं जिस ऊंचाई को मैं छू चुका हूं। तो वो जो आदमी बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। अपने को भी अंदर से ऊंचा करिए, ईगो से ऊंचा मत करिए। फलदार वृक्ष झुकते हैं, फलदार वृक्ष झुकते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो तने रहते हैं। तो हमें झुकना भी आना चाहिए, हमें दूसरों की इज्जत करना भी आना चाहिए, और हमें ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। तो जब हम ये सीख लेते हैं तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। भारत में जॉब्स लिमिटेड है। भारत में अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ मुझे बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, और मुझे ये मान के चलना है कि मान लो आज मैं बैंक में अफसर बन गया तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो कि मैं बेस्ट हूँ। मेरे से बहुत क्वालिफाइड लोगों को शायद ये नौकरी नहीं मिली है। ना मैं सबसे बेहतर हूँ, ना मैं सबसे इन्फीरियर हूँ। अगर मुझे कुछ मिला है उसकी मुझे इज्जत करनी है, उसको मुझे वैल्यू करना है। तो अगर मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ तो मुझे उन नौकरियों की तलाश करनी चाहिए जो मुझे मिल सकती है, आसानी से मिल सकती हैं, उस पर चलिए। गॉड ब्लेस यू।